Namaskar, and a very warm welcome to all of you in this episode. Now, whenever I speak or write some blog or some article, there are some people who always ask me to do the same in Hindi also. Because I teach in a school which is having the medium of instruction as English, but then of course there are many parents and many people who may not be in a position to be that comfortable while the things are sent to them in English or spoken in English. And particularly for those kids whose parents would not have, when we talk of RTE children in school, of course, their parents are good. They're absolutely having many skills, but when it comes to the language, they may be great in their local language or in Hindi, but may not be that comfortable when it comes to English. So what happens that while speaking and writing in English, we tend to speak in Hindi also, which will make everyone aware of what we are trying to convey. क्योंकि अगर वो बात ही नहीं समझ में आई कि जो हम कहना चाह रहे हैं, तो उस बात कहने का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं होगा जिनको वो बात समझाना चाहते हैं. Because when I say that many schools which are affiliated to CBSE are having medium of instruction as English. And it has been found that all those children who are coming from different background, when I say different background, means the language which is spoken at home and the language in which the instructions are given or teaching is done in the school, if these two are different, then the children really find it difficult to comprehend what the teachers are teaching. And if the children are not able to comprehend what the teachers are teaching, then it definitely becomes an issue for the kids. They find themselves in a situation as they are weak, or the parents start saying that, or the teachers start feeling that way. See, in NEP 2020 and NCF 2023, what the government has proposed that we must have the medium of instruction at foundational stage as their mother tongue or a regional language. So if we take the case of Uttar Pradesh, because mother tongue may be slightly different at times than the regional language. And when I talk of a regional language in Uttar Pradesh, it would be Hindi mostly. And if I go to down south there, it can be Kannada, it can be Malayalam, it can be Tamil, and it can be Gujarati, or it can be Marathi, it can be Bengali if you go to the east side. And if the children are taught only in English, then it becomes very difficult for the kids who really are not familiar with this language. So this is the reason CBSE has come out with a circular to schools which are affiliated to CBSE, asking them to map the language of the children at home and then train themselves and create the material which can help children to learn in their own mother tongue / regional language. So this circular was given on 22nd of May, and they've asked schools to do it in a time frame which seems to be not really realistic. But anyway, that's a different issue, but the schools must do it. And when I say must do it, because this is very important for the kids, but there are questions being asked about it. And there are many people who are opposing it. There are many people who are saying it may not be a great idea in this country, which is so vast in terms of regions, in terms of languages and dialects which are spoken, and in terms of socio-economic situation of the parents. But I tell you that the UNESCO is very clear about it, and UNESCO is the one which has been, and even UNICEF and many other global organizations which are really concerned about the school education, and particularly at foundational stages. And they say that if the medium of instruction is the local language, the mother tongue or the regional language, then the children really perform 30% better than what they would do in case the medium of instruction is some other language. And they have done an experiment, particularly they are talking more about Africa continent, because the number of languages there is, different countries and different regions, too many. We do have in our country, in Bharat, lot many number of languages and dialects, but this is more over there. And there is a country, Mozambique, in Africa continent. There they have taken around 25% of the schools have been switched to having the mother tongue / regional language as the medium of instruction. And what they found is
that there is an improvement of 15% in the learning levels of language and numeracy, that is mathematics. So it helps children. And I tell you, the Director General of UNESCO had given one statement for all the governments, for all the countries, and there he says, to help fight the current global learning crisis while preserving the linguistic diversity, which is an essential cultural element, UNESCO urges governments to embrace multilingual education based on the mother tongue from the earliest years of schooling. We know it works. There is empirical evidence to prove it helps children learn better. This is what the Director General of UNESCO says. And these, the things which I told you, that evidences are there, that 15% better learning in Mozambique. So what is this? How is it done? And what is proposed by CBSE based on NCF? They have talked about 3 languages. And they have grouped into R1, R2 and R3. Now, R1 is the language which is to be used as medium of instruction at foundational stage, that is pre-primary to class 2. And the same language is to be taught otherwise also. The children are to be made very, very competent in this particular language. And this language should be the local language, the mother tongue oblique the regional language. And that is what is to be done. So they are trying to focus so much on literacy and numeracy. And as I told you, if the children are taught in the language they understand and they are familiar with, they would be able to comprehend things very, very easily. अब आप देखिए कि when the children come to school the first time, उनके लिए सब कुछ नया होता है. बिल्डिंग नई, टीचर्स नए, सब लोग नए होते हैं. And the language in which the people are talking to them, if that language is also not familiar one, so अब उन बच्चों की हालत देखिए कि कैसी हो जाएगी. So अगर at least language उनकी familiar हो, so they would have at least something really, and when the teachers will talk to them in that language which they are familiar with, वो थोड़ा आसान रहेगा उनका टीचर्स के साथ में बॉन्ड बनाना. और जब एक टीचर्स के साथ उनका बॉन्ड जल्दी बन जाएगा, so they would start learning better. उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा कर पाएंगे. देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होंगी जो लैंग्वेज घर में भी बोली जा रही है. और आपके पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिलकर के बच्चों की हेल्प बेहतर तरीके से कर सकते हैं. देखिए अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्कूल में कुछ है और घर में बच्चों को कुछ और तरह से बातें की जाती है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड. अगर वो सेम है तो आसान हो जाता है, बच्चों के लिए भी आसान हो जाता है, पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी. तो एक तो कम्युनिकेशन आसान हुआ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे का बूस्ट होता है, चूंकि जब समझ पाएगा तो जवाब भी दे पाएगा, और जब जवाब देता है तो बच्चे को अच्छा लगता है, हर एक को अच्छा लगता है, आपको और मुझे भी अच्छा लगता है when we are able to answer a question which has been put by somebody to us. But if you ask me a question in a language I am not familiar with, even if that question is so easy and I know the answer, and since I have not understood the question itself, because the language is different, hence I would not be able to answer it. सब लोग क्या सोचेंगे, मुझे तो वो कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है, जबकि वो कॉन्सेप्ट आता है मुझे, जो लैंग्वेज से मैं फेमिलियर हूं. अगर मेरे से उसमें पूछा जाता तो मैं आपको जवाब दे सकता था. मैं फाउंडेशनल स्टेज की बात कर रहा हूँ. R1 जो आ रही है वो एक लैंग्वेज है जो कि फाउंडेशनल स्टेज पे ही आ रही है. वो हिंदी हो सकती है, वो कन्नड़ हो सकती है, वो तमिल हो सकती है, वो गुजराती हो सकती है, वो पंजाबी हो सकती है, वो बंगाली हो सकती है, वो असमीज हो सकती है, वो मराठी हो सकती है. आई मीन इट कैन बी एनी लैंग्वेज. तो उसमें बच्चा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चूंकि उनका अपना जाना पहचाना है, तो दैट चाइल्ड विल बी डूइंग बेटर इन इवन मैथमेटिक्स ऑल्सो. जो न्यूमरेसी है उसमें भी बच्चा अच्छा कर रहा होगा. कॉन्फिडेंस लेवल की मैंने आपको बात बताई. ये क्लास 2 तक ये काम हो जाना चाहिए, ऐसा सीबीएसई भी मैंडेट करती हैं. और उधर से एनईपी और एनसीएफ का भी सुझाव यही है, जो बाकी बोर्ड्स को भी और बाकी स्टेट्स को भी करना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है. लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लगता है ये ठीक नहीं होगा. मैं ये कहता हूं कि जो ये सोचते हैं कि बच्चों के लिए एक नई लैंग्वेज, क्योंकि अगर क्लास में 40 बच्चे हैं, there is always a possibility that 35 may be understanding that regional language, और 35 बच्चों के घर पर वो लैंग्वेज बोली जाती होगी. 5 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि दूसरी लैंग्वेज बोलते हो. मैं आपको बताऊं, उन 5 के लिए आप 35 को क्यों तकलीफ में देना चाहते हैं, और उन 5 को संभालना ज्यादा आसान है.
35 के मुकाबले। चूंकि उन बच्चों के अंदर एक, हम जब बड़े हो जाते हैं हमें चूंकि नई लैंग्वेज सीखने में तकलीफ होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद बच्चों को भी नई लैंग्वेज सीखने में बड़ी तकलीफ होती होगी। आई टेल यू, द चिल्ड्रन आर एबल टू लर्न इफ दे आर कॉन्फिडेंट, इफ दे आर एबल टू कम्युनिकेट इन वन पर्टिकुलर लैंग्वेज सो वेल, तो वो उसको नई लैंग्वेज सीखने में भी आसानी होती है। तो आप अगर उसको मदर टंग जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें स्ट्रॉन्ग कर देंगे, तो नई लैंग्वेज जो आप सिखाएंगे वो भी उनके लिए सीखना आसान हो जाएगा। तो क्लास 3 ऑनवर्ड वो कह रहे हैं R1 के साथ साथ R2 आप एक जोड़ दीजिए, और R2 जो ग्रुप वाली लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश आप ला सकते हैं। तो आप चाहते हैं तो दूसरी लैंग्वेज ले आएं, नहीं तो चूंकि हमें लगता है कि इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज एंड आवर चिल्ड्रन मस्ट लर्न इंग्लिश एज अर्ली एज पॉसिबल, हेंस वी कैन हैव इट फ्रॉम क्लास 3 ऑनवर्ड. So add it as a language, or in some cases wherever you find that the children who are coming to your school are very, I mean their family members are very good at English, so you can switch from your R1, that your mother tongue or regional language, to English as the medium of instruction, and also have that R1 being taught there in the classroom and teach English also as a subject. It's not only the medium of instruction, it's going as a subject also. And by the time the child has qualified class 5, then अब क्या हुआ, R1 मदर टंग रीजनल लैंग्वेज, the child is very strong in that. The child is very strong in English as well, or any other language you would have chosen, depending upon which state and which place you are situated at, and what the parents are wanting from you as per their language which is spoken at home. अब क्लास 6 में जाकर के एक लैंग्वेज और जोड़ेंगे, R3 करेंगे, R3 में से एक लैंग्वेज आप और जोड़ेंगे, और यहां पर आप बिना किसी प्रॉब्लम के यू कैन शिफ्ट फ्रॉम योर रीजनल लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इन एज मेनी स्कूल्स एज पॉसिबल, और मे बी इन ऑल स्कूल्स. नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम्स. CBSE or NEP does not really stop you after class 5. That is 6th onward, you can use English as the medium of instruction till the time the children really graduate from your school. तो इससे बच्चों को बड़ा फायदा होगा. देखिए, एक तो कल्चरल आइडेंटिटी, अपनी लैंग्वेज. देखिए, कहते हैं कि दुनिया में करीब 6700 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं. अगर एक ही लैंग्वेज में सब बोलना शुरू कर देंगे तो ये सारी लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स तो हमारे काफ़ी कुछ तो मर ही गए हैं, और ये लैंग्वेजेस भी चले जाएगी. और डाइवर्सिटी में जो ग्रोथ होती है वो कभी भी, आपको मैं बताऊं, सिंगुलरिटी में कभी नहीं होती. आप मान के चलिए इसको, जब डाइवर्स व्यूज होते हैं, डिफरेंट व्यूज होते हैं, देन वी कम आउट विद द बेस्ट. We cannot come out with the best only with one thought. There are not many thoughts which are to be. So that same applies here also. सब जगह की अपनी अलग आइडेंटिटी होती है. और मैंने कई लोगों को ये सुना कहते हुए कि एज आई वाज टॉट इन इंग्लिश मीडियम ओनली एंड वी यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली एंड वी यूज्ड टू स्टडी इंग्लिश बुक्स ओनली, सो आई रियली कुड नॉट कनेक्ट विद माय प्लेस ऑफ बर्थ. बिकॉज जो बहुत सारी चीज़ें थी, अगर मैं महाराष्ट्र में किसी स्कूल में पढ़ता था, या बंगाल में पढ़ता था, या यूपी में पढ़ता था, तो अगर वहाँ मैंने उस लैंग्वेज में पढ़ा होता, मुझे वहाँ की लोकल स्टोरीज, लोकल घटनाएं उस लैंग्वेज में आसानी से मिल जाती, जो मुझे अंग्रेजी में या किसी दूसरी लैंग्वेज में नहीं मिलेंगी. इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि फाउंडेशनल स्टेज पर हमारी रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग की इम्पोर्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते. मैं मानता हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी तकलीफ होगी, बट अगर इम्प्लीमेंट करके अच्छा होता है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा होता है, बच्चे हमारे बेहतर होते हैं, सोशल स्किल्स उनकी बेटर होती है, उनका कॉन्फिडेंस बेटर होता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हैं, उनके कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस दे बिकम बेटर. बिकॉज ये हमने बहुत देखा है. अगर आप बच्चों को एक नॉर्मली ये कहोगे डिवाइड दिस बाय दिस, they are able to do it so easily. But if you put it in a problem form, and it's a very simple language which we are using, but still the many children are not able to solve it. The problem would have been that they did not understand and comprehend that English version of that. आप उसी को हिंदी में करके बता दीजिए, या उस लैंग्वेज में करके बता दीजिए, जो बच्चे जिसको आसानी से समझते हैं, वो उस क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर देंगे. तो ऐसा है नहीं, लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज में ही तकलीफ नहीं करती है, ये बाकी सब्जेक्ट्स और मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को, और मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स को, मेरी सोशल स्किल्स को, मेरी क्रिएटिव स्किल्स को, सबको नुकसान पहुंचाती है. तो मैं देखिए, इसमें करना क्या है, टीचर्स को थोड़ा ट्रेनिंग लेनी होगी, एक से ज़्यादा लैंग्वेज उनको जाननी पड़ेगी. कि अगर मैं किसी ऐसे स्टेट में पढ़ाता हूँ जिसके लैंग्वेज मुझे कम आती है, तो आई मस्ट लर्न, और द government has to do it in such a manner that the teachers of that particular area are there in that region, so that they are able to use the other language also there in the classroom.
तो देखिए 3 लैंग्वेजेस बच्चे हमारे 8वीं क्लास तक तैयार हो जाएंगे। हमारा इनिशियल स्टेज पे बच्चों को जब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेज होगी तो उससे कॉन्फिडेंस और बेहतर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड सोशल स्किल्स हो जाएगी। चाहे हमें थोड़ा सा शुरू में लगे कि इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट, इट मे अपीयर सो टू द पेरेंट्स एंड देयर मे बी मैनी पीपल हु वुड से दैट इट्स a complex country, it's a multilingual country, it's a big country, we are still struggling resources. I mean, all these problems are there, but that does not mean that we should not start doing something which helps our children understand and learn things better. I hope this makes little clarity to every one of you as teachers and parents, and we'll take it in a right spirit and help our children and ourselves in making things better. So, and see, before I really end, I would like my listeners, viewers to kindly share their thoughts. What do they feel? And please do not give only the problems, give some solutions also, because there's a proven fact, there are evidences that when you are taught in regional languages, you perform better. So that you can't deny. So if knowing that so well, kindly give your suggestions. So with this, I take your leave and I'll meet you the next time on a different topic. Thank you very much. God bless us all.